Hi viewers, this is you Rajeshwar. Today we shall discuss about your topic restriction in the nucleus. My dear students, last class I thought that the restriction in the nucleus enzyme. So today we are learning about the restriction in the nucleus enzyme, nomenclature and restriction in the nucleus enzyme, two subunits. So we are learning about the last class restriction in the nucleus enzyme. You know that here it is completed to the restriction in the nucleus enzyme. So we are showing about this image. So this is a restriction in the nucleus enzyme. So कैसे restrict कर रहे हैं? Let I will discuss you. So you know that my dear students. So this one once we are observing here. So this is a DNA molecule. So this is a double helix of the DNA molecule. So in this double helix of the DNA molecule is recognized to this site. So we are observing to this site. So this is a recognized sites. So in this recognized sites, so here the recognized sites is sites में adenosine this one nitrogen base pair adenine nitrogen base pair. So here the in the downwards of the adenine nitrogen base pair, here the recognized and here the recognized of this site. So in this recognized sites is binding to the restriction and restriction enzyme. So here the restriction enzyme is cleavage to the DNA molecule. So here look at it here. So this is a cleavage to this DNA molecule. So this one cleavage this DNA molecule. So such kinds of the DNA molecule is cleavage here. So such kinds of the restriction endonuclease is also called as in this endonuclease also called as sticky cleavage. Sticky STIKEY sticky. So sticky cleavage. So this one क्या बोलते हैं ना, this one ऐसे restriction करेगा तो यहाँ पर देखो this one and this one देखो. So ऐसे restrict करेगा तो that one के क्या बोलते हैं ना, sticky cleavage बोलते हैं. So for example here the DNA molecule देखो. So here the DNA molecule में क्या कर रहा है ना, bended DNA molecules are there. So bended DNA molecule मतलब क्या करना, for example वो DNA molecule में यहाँ पर G for example देखो. So here so देखिए ATGCC. So this is a DNA molecule. So in this DNA molecule में for example देखो यहाँ पर क्या करना है GGCAT. So this one है GGCATC. So this one में क्या करना ना, for example here the DNA molecule. So this one DNA molecule में क्या कर रहा है ना, for example here DNA molecule वो binding हो गया तो so सेम टू सेम जी का साथ क्या करना है, DNA molecule बाइंडिंग हो गया तो that one cleavage is also called as bended. So blended cleavage of the DNA molecule we are observing to this DNA molecule. So this is the cleavage करने के लिए यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, restriction endonuclease enzyme यूज कर रहे हैं. ऑलरेडी पहले में बोल दिया वो क्लास. एंड नेक्स्ट वन देखिए सोर्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. सो यार द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्या करना है, सोर्सेस क्या क्या करना है यहाँ पर सोर्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है यहाँ पर देखो. सो मेन द नेचुरल सोर्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस इज मेन सोर्सेस ऑफ बैक्टीरियल सेल. So bacterial cell is the main source of the restriction endonuclease enzyme. We are observing here, right? So here the restricted endonuclease enzyme main sources क्या करना restrict करने के लिए bacterial cell is main source of the restricted endonuclease enzyme. And next one, these are the enzymes is called a restricted enzyme. Bacterial cell is restricted to the infection of the bacteria. So that one आप लोगों को लिखना चाहिए bacteriophage like that. Some of the restricted endonuclease enzymes are there. Those are आप लोगों को लिखना चाहिए. And here the restricted endonuclease enzyme का main क्या होगा ना, this one. So this one देखिए recognized site है. So first one recognized site में देखिए here the recognized site में क्या करना है, the DNA sequence are recognized by a restriction endonuclease enzyme is called palindrosome. Keep it your mind. So this one क्या बोलते हैं ना, restrict करने के लिए यूज कर रहे क्या करना, the DNA sequence is recognized by the restriction endonuclease enzyme. So DNA sequence है this one. So this is a DNA sequence है, वो DNA sequence में क्या कर रहा है ना, recognize कर रहा है. So this one DNA sequence में और this one DNA sequence में recognize कर रहा है. So that one क्या बोलते हैं ना,
पैलेंड्रोजोम्स बोलते हैं. दिस वन को क्या बोलते हैं ना, पैलेंड्रोजोम्स बोलते हैं. So next one, palindromes are the basis sequences that read to the same as two stands but in the opposite direction. So वो palindromes क्या करना, read to the same stands. So for example ये है तो क्या, यहाँ पर G है तो क्या करना, यहाँ पर C, यहाँ पर ये है तो T ये G. So like that same sequence reading करने के लिए वो यूज कर रहे हैं. And next one क्या करना, for example if the sequence one side of the GATTC, so 5 direction to 3 direction. So this one देखिए CATTG, so this one 3 direction to 5 direction, opposite direction में क्या करना वो रीड करने के लिए वो यूज़ कर रहे हैं. So आप लोगों को क्या करना वो यूज़ करिए. So यहाँ पर क्या करना, फॉर एग्जाम्पल रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर कोई एरिया में, AT में रिस्ट्रिक्ट करेगा तो क्या करना, दिस वन AT ये में रेस्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल दिस वन रेस्ट्रिक्ट करेगा तो क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, अगेन रीड कर रहा है यहाँ पर टी में. सो आप लोगों को आइडेंटिफाई करिए दिस वन restricted endonuclease enzyme. So next one क्या करना, mechanism of the cleavage restriction. So cleavage restriction endonuclease enzyme is also called as cleavage enzyme. So here the cleavage enzyme में first one क्या करना है, mechanism क्या कर रहा है ना. So we are restricted to this endonuclease enzyme required for the certain particle sequences. So आप लोगों को पता है वो वाला लिख दो. So next one types of the restriction endonuclease enzyme. Last class I thought that the types of the endonuclease enzyme. So here the types क्या करना है, traditionally here the types of the restricted endonuclease enzyme is recognized by the type 1, type 2, type 3, type 4. So different primary structures, cleavage sites is specific and the cofactors. Here the specific and the cofactors are there. So that मतलब क्या करना, cleavage करने के लिए क्या करना, cofactor involving हो गया. Next one क्या करना, holo enzymes involving हो गया. So here the restricted endonuclease enzyme type 1 enzyme, type 2 enzyme, type 3 enzyme, type 4 enzyme ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया तो पहले वीडियो में. सो आप लोगों को वो लिखना चाहिए. सो नेक्स्ट वन देखो, टुडे लेट आई विल डिस्कस अबाउट nomenclature of the restricted endonuclease enzyme. So my dear students, keep it in your mind. So we are must be learning about this nomenclature of the restricted endonuclease enzyme. Nomenclature of the सो देखिए, सो nomenclature of the restricted endonuclease enzyme. So nomenclature of the restricted endonuclease enzyme. Here देखिए nomenclature. Since this discovered in 1970. So nomenclature of the endonuclease enzyme is discovered in 1970. Many restricted enzymes have been identified while type 2 restriction endonuclease enzyme is characterized. So you know that my dear friends, so in this restricted endonuclease enzyme is having a number of the restricted endonuclease enzymes. So that is a restricted endonuclease enzyme 1, 2, 3, 4, 5, 6 like that. Those are the enzymes is having the restricted endonuclease enzymes. So in this restricted endonuclease enzymes, you know that type 2 is having the number of the subunits. So first of all we shall discuss this one. Each enzyme is named after the bacterium from which was isolated using a nominating system based on the bacterial genus. So species and strains, for example the name of the ECOR, this one देखो, for example name of the ECOR restriction enzyme was derived. So this one subunit of the restriction enzyme. So वो enzyme कैसे restrict कर रहे, that I will discuss. We shall discuss this one. So कैसे discuss कर रहे वो देखिए आप लोग. So for example देखो my dear students, so in this restricted endonuclease enzyme having the Escherichia coli. So for example देखो this is a E. So this one E. So E means Escherichia coli. This is a genus. And the next one करना ना co Escherichia genus. CO मतलब coli species. And the next one R मतलब क्या करना, restricted enzyme 13 strain. And I मतलब क्या करना, first identified and order identified in this bacteria.
सो दैट मतलब क्या करना, वो एंजाइम को क्या बोलते ना, इको इको R1 एंजाइम बोलते हैं, इको R1 एंजाइम। ई मतलब एस्ट्रेशिया, एचरीशिया, एचरीशिया जीनस, को मतलब कोला स्पीसीस, आर मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वन मतलब क्या करना, आइडेंटिकल आर्डर ऑफ द एंजाइम, आइडेंटिकल आर्डर ऑफ द एंजाइम। सो दोज बार क्या करना हम लोग वो यूज़ करना चाहिए, यूज़ करेंगे तो वो ईजी होगी ना, रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम, दैट इज नॉमेनक्लेचर के लिए आप लोगों को लिखना चाहिए। देन नेक्स्ट वन क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एप्लीकेशन। सो देखिए एप्लीकेशन, सो restriction enzyme can be isolated from bacterial cell and used in the laboratory to manipulate fragments of the DNA such as those containing genus, for this reason they are indispensable tools of recombination DNA technology. So that is genetic engineering technology. So वो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में क्या करना, वो यूज़ करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करने के लिए वो टेक्निक होना चाहिए। सो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो यूज़ करने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग दिस वन। अनदर वन देखिए, द मोस्ट यूजफुल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम इज each enzyme recognized same as a unique base sequences recording the source of the DNA molecule. So DNA अवेलेबल है तो क्या करना, यहाँ पर क्या करना ना, रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम क्या कर रहे हैं ना, रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम में रिकॉग्नाइज्ड हो सेम एज ए यूनिक, सेम एज यूनिक मतलब फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या करना, बैंडेड रिक्वेस्ट एंड अनदर वन रिस्ट्रिक्ट क्या करना, स्टिकी, टू टाइप्स ऑफ द रिस्ट्रिक्ट्स। सो बैंडेड रिक्वेस्ट में क्या कर रहे हैं ना, ब्लेंडिंग, सो ब्लेंडिंग ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड साइट। स्टिकी रिक्वेस्ट में क्या करना, स्टिकी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड साइट। सो बोथ स्टेट में क्या करना, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन आप लोगों को लिखना चाहिए। सो नेक्स्ट वन क्या करना, ईच फ्रेगमेंट, फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्ट के ईच फ्रेगमेंट जनरेटेड आल्सो अवेलेबल द फर्दर एनालिसिस इंक्लूडिंग द सीक्वेंस। सो फॉर एग्जांपल वन एंजाइम क्या करना, रिस्ट्रिक्ट हो गया वन डीएनए मॉलिक्यूल, दैट वन क्या करना ना, जनरेट कर रहा है नेक्स्ट वन डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी में और रिप्लिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या करना ना, वो यूज़ करने के लिए वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत वेरी यूजफुल है, बिकॉज क्या करना, वो फ्रेगमेंट क्या करना, नया फ्रेगमेंट आप लोगों को चाहिए तो, सो नया एनिमल चाहिए तो क्या करना, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके उसका एनिमल सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म डीएनए कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट करने के लिए वो एंजाइम यूज कर रहा है, रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सो इन दिस रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कितना नाइट्रोजन बेस पर चाहिए उतना क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वो एंजाइम यूज कर रहे हैं। सो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पहले मैं बोल दिया। सो हियर द रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस वन इज कट टू the hominin nitrogen base pair and 2 is cut to the hominin nitrogen base pair and 3 is cut to the hominin nitrogen base pair. Already I talking about the before class. So that's why we are must be observing here to the restriction endonuclease enzyme applications. So for example देखो here the some examples of the restricted endonuclease enzyme. So some examples of the restricted endonuclease enzyme. For example देखिए, so this one enzyme, so this is a DNA molecule 5' to 3' and this one 3' to 5' of the DNA molecule. So here the 3' to 5' of the DNA molecule क्या करना है, this one DNA का क्या करना है, हिंड डाइजेस्ट कर रहा है। so hind 2 enzyme, this is a restricted endonuclease enzyme 2. So restricted endonuclease enzyme 2 is a digest to this DNA molecule. So this enzyme क्या करना है, वो डाइजेस्ट करने के लिए वो एंजाइम यूज होगी, दिस इज ए सब एंजाइम ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। सो डाइजेस्ट करेगा तो क्या होगा ना, दिस वन देखिए, फॉर एग्जांपल दिस इज ए रिकॉग्नाइज्ड साइट, दिस वन रिकॉग्नाइज्ड साइट। सो दिस वन रिस्ट्रिक्शन, विच टाइप ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, स्टिकी रिस्ट्रिक्शन। सो स्टिकी रिस्ट्रिक्शन में क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करने के बाद क्या करना ना, सो दिस वन सीक्वेंस ऐसा होगा, दिस वन सीक्वेंस ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल वो सीक्वेंस आप लोगों को चाहिए था ना, दिस वन ऑर्गेनिज्म सीक्वेंस ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट है, वो उस फ्रेगमेंट क्या करना ना, सो फॉर्म मटेरियल में डालने के लिए वो यूज होगा, इसलिए वो एंजाइम वेरी यूजफुल है। एंड नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पर क्या करना, pastel digest, this one another one restricted endonuclease enzyme 1 का सब यूनिट है, दिस वन एंजाइम
PSTL एंजाइम. सो दिस वन में देखो दिस इज ए रिकॉग्नाइज्ड साइट है, दिस इज ए रिकॉग्नाइज्ड साइट है. वो रिकॉग्नाइज्ड साइट में क्या करना, वो एंजाइम रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. रिस्ट्रिक्ट करने के बाद क्या करना है, दिस वन ऐसे अरेंजिंग होगी. एंड नेक्स्ट वन अनदर एंजाइम देखो एचरिशिया कोलिन रिस्ट्रिक्ट 5 एंजाइम है दिस वन. सो दिस वन 5 एंजाइम में देखो दिस इज ए बैंडेड साइट है, मैं पहले बोल दिए ए के साथ वो ए के साथ दिस वन रिकॉग्नाइज्ड साइट है दिस वन. सो हियर द रिकॉग्नाइज्ड साइट में क्या करना है, दिस वन डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करेगा तो सेपरेट हो गया. सो दिस वन रिस्ट्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लंट रिक्वेस्ट बोलते हैं, ब्लंट रिक्वेस्ट. सो दिस इज ए ब्लंट रिस्ट्रिक्टेड, दिस वन स्टिकी restricted. So here the blunt and sticky restricted both restricted is having the restricted endonuclease enzyme. यहाँ पर देखो sticky are protruded ends 5' to 3' and blunt ends produced by the specific restriction enzyme. So two ends are restricted, sticky ends and blunted ends. आप लोगों में वो आइडेंटिफाई करना चाहिए. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर वो एंजाइम में देखिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स हियर द एंजाइम देखो, एंजाइम obtaining from the bacterial cell and a recognized sequence. So recognized sequence आप लोग हम देखिए. So for example eco R1, so this is a subunit of restricted endonuclease enzyme 1. R1 मतलब restricted endonuclease 1. R2 मतलब restricted endonuclease enzyme 2. R1 मतलब restricted endonuclease enzyme. So this one R3 मतलब restricted endonuclease enzyme 3. So ऐसा आप लोगों में आइडेंटिफाई करना चाहिए. So this one क्या करना है, E मतलब एचरिशिया कॉलन, E मतलब एचरिशिया जीनस, CO मतलब कॉलन स्पीसीज, R मतलब restricted 1. सो एचरिशिया कोली ऑर्गेनिज्म में क्या करना, वो एंजाइम मिल गया. सो दिस एंजाइम का रिकॉग्नाइज्ड साइट क्या करना है, GATTC. सो दिस इज ए रिकॉग्नाइज्ड साइट. सो 3' and 2 3' and. सो हियर द रिस्ट्रिक्ट कर रहा है CATTAG. सो दैट मतलब यहाँ पर है CAC. आप लोग वो अंडरस्टैंडिंग करिए GA. सो GATTA उसका डाउन में वो लिखना चाहिए, वो 3' and. सो 3' and में क्या करना, C G पर क्या करना, C, A पर T, T पर A, G पर A. यहाँ पर देखो CTTAG. सो दिस वन सीक्वेंस है. सो दिस इज ए रिकॉग्नाइज्ड साइट है, वो वाला आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए. सो नेक्स्ट वन क्या करना ना, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. अनदर वन क्या करना है, CAWGG. सो दिस वन रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम है. सो दिस वन में क्या करना है, C का मतलब वो GWGCC दिस वन है. सो दिस वन वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो एंजाइम है. और नेक्स्ट वन क्या करना ना, थर्ड वन BAM मतलब बैसिलस, B मतलब बैसिलस. सो बैसिलस इज ए जीनस. एंड नेक्स्ट वन क्या करना, ये मतलब अमाइलो लिक्विफेंसिया. सो अमाइलो लिक्विफेंसिया बैसिलस अमाइलो लिक्विफेंसिया. सो बैसिलस अमाइलो लिक्विफेंसिया. H मतलब क्या करना, हिंड. सो H मतलब हिंड एंजाइम. सो रिस्ट्रिक्टेड बैसिलो अमाइलो लिक्विफेंसिया एंजाइम आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए. सो दिस वन का क्या करना ना, दिस वन रिक्वायरिंग साइट. सो हिंड 3 एंजाइम. हिंड मतलब क्या करना है, H मतलब हीमोफिलस हिंड इन्फ्लुएंजी रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम 6 आप लोगों को आइडेंटिफाई करिए. सो दिस इज नॉमेनक्लेचर के लिए आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहिए. सो दैट मतलब क्या करना है, नॉमेनक्लेचर के लिए क्या पर लिखना चाहिए. सो नॉमेनक्लेचर ऑफ द एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर स्टार्ट करके वो लास्ट तक को लिखना चाहिए. सम एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. सो यहाँ पर तक वो लिखना चाहिए. आप लोग वो लिखेंगे तो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नॉमेनक्लेचर वो खत्म हो गया. सो आप लोग मस्ट भी आइडेंटिफाई करिए. थैंक यू.